या क्या करें? सर एक मिनट सर, एक मिनट बस. Okay. Akshat, what are you doing? How to approach this problem? Still thinking, sir. Okay. Sir, how will we simplify 17? That's what we have to figure out. Sir, I Yeah. think I got it. 16 and 1. Sir, 16 and sir, I have an explanation. Okay. Sir, if I take log 5 to the base 5, the answer is 1. Okay. So log 3 to the base 5 will be a value less than 1. Okay. And log 25 to the base 5 is 2. So log 17 to the base 20, log 25 to the base 17 will be a value greater than 2. Hence B is greater. नहीं यार, not correct. अच्छा, tell me one thing. Last class में हमने क्या पता किया था? If you have two different log let's say 10 and log 15, and if base is same, let's say base is 3, then can you tell me which is greater of the two? Yeah, log 15. Log 15. Obviously. इसका मतलब when base is same, then there is no problem in comparing. Do you all agree with this point? Yes. Sir, can we write 25 log 25 base 17 as twice of log 5? 17 base 5 base 17. Yeah, 5 base Correct. 17. Correct. First step should be like this. A Sir, is after that I didn't get. okay, fine. मैं बताता हूँ. A is log 5 to the base 3 and B can be written as log of 5 square to the base 17. This 2 will come outside, so this will become 2 log 5 to the base 17. Fine. इतना क्लियर है सबको? हाँ सर. But what is our aim? Our aim is कि हम इन दोनों का बेस क्या बनाए? सेम बनाए. कैसे बना सकते हैं यार? यहाँ log का number is 5, here also number is 5. I want this 5 to be in the base. Is there any way to do this? Can I write log A to the base B as 1 upon log B to the base A? Yes, sir. So we can write So it we as can log write 3 to the base 5. can write A as 1 upon log 3 to the base 5 or not? Yes, sir. Yes, sir. And B as 1 upon 2 log 17 to the base 5. Oh, sorry. 2 will be in the numerator. Really sorry. Yeah, 2 तो numerator में ही रहेगा. This log 5 to the base 17, we have written it as 1 upon log 17 to the base 5. Is this fine with everyone? Yes, sir. ठीक है. Yes, अपन sir. को बस इस 2 को भी एडजस्ट कर लेते हैं. 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? जस्ट सी क्या मैं कर रहा हूं. Can I write B as 1 upon 1 by 2 log 17 to the base 5? Okay, and I can take 1 by 2 inside. So I can write it as 1 upon log root 17 to the base 5. बस मैंने इतना लिख लिया यार. ठीक है, तो मैंने सिंप्लीफाई किया है. I got A as 1 upon log 3 to the base 5 and I got B as 1 upon log root 17 to the base 5. Is this clear to everyone? मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है so that दो log जिनको मुझे कंपेयर करना है उनका बेस सेम हो. I wanted that. अब जैसे मैंने ये पता कर लिया, now can you compare like the denominators log 3 to the base 5 and log root 17 to the base 5? Which will be greater of the two? Sir, root 17. This will be the inequality. Yes. And since this is the inequality, if you reciprocal both the terms, the inequality will reverse. Inequality will reverse. And finally, A is greater than B. This is your answer. Got it, everyone? Okay, sir. Akshat? sir. Okay. So these are like basic manipulations जिसमें हम लोग we are using the different properties of log which we have studied so far. एंड में आपने इनको उनमें क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर में क्यों जा रहा आपने एंड में? Yeah, this one. Hello? Yeah, ask. सर एंड में हाँ यहीं पे आपने डिनोमिनेटर में क्यों जा रहा है? Like we had log 3 to the base 5 is less than log correct root 15 but to the base 5. What is your A and B? What is your A and B? You have to find the relation between A and B, na?
Yes, sir. A and B are reciprocal of these two terms, na? Oh, okay, I understand. Ultimately, I have to find the relation between A and B. Question में तो वही Yes, था sir. ना? So that is why I have done the reciprocal. Okay. I hope this question is clear to everyone. Let's move forward to the next set of concepts. Characteristic and mantism. So let's continue that topic. What we discussed under this heading yesterday, I'm just revising all those things. क्या conclusions हमने देखे थे? I think there were 3 conclusions. First one is log x to the base a, where a is greater than 1, is of increasing nature. This was one conclusion. Everyone remembers? Yes. Yes, sir. Similarly, log x to the base a, where a is between 0 to 1, is of decreasing nature. All right. And third thing which we concluded at the end was when number and base are on same side of unity, then log is Increasing. no. Then value of log is anyone? Positive. Okay. And the last conclusion was when number and base are on opposite side, of unity, value of log is negative. Okay, so these were our 4 conclusions which we studied in the last class. सबको ये चारों conclusions समझ में आने चाहिए. So just based on this conclusions, I am again asking 2-3 simple questions. That is, log 15 to the base 0.3. Tell me about this. इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं just by observing? Negative. This will be negative. The final answer will be negative. इसका मतलब just remember the basic definition of log. Log की definition क्या होती थी? That is the power to which base must be raised in order to get this number. It means 0.3 कि हम कैसी power करें so that I get 15. तो कैसी power करना पड़ेगा? Negative power करना पड़ेगा. Then only I will get 15. Are you able to connect this? Yes, sir. Yes, sir. So finally ये बार बार connect नहीं करना है. It's just that कि whenever number and base are on opposite side of unity, like they are on different side of 1, then the value of log comes as negative always. Okay, it means इसको देखते हमें सबसे पहली बात बताना आना चाहिए, that is this will be negative. Okay, second, एक दो और simple. Log 1/3 to the base 1/2. Positive. Positive or negative? Positive. This will be positive, right? Because both the number and base are on same side of 1, that is lesser than 1. Got it? Next, log 1/3 to the base 1/2 and log 1/4 to the base 1/2. Which is greater? 1/2 Sir, 1/4 to to the base the 1/2. 1. 1/. Sure. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Base is 1/2. Base is less than 1. Nature will be increasing or decreasing? Decreasing. अरे बोलो यार, confidently बोलो ना. Decreasing. Since base is decreasing है तो फिर वही हुआ. since अरे फाइनल आंसर के बारे में आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट आस्किंग कि नेचर क्या होगा बेस 1/2 वाला? डिक्रीजिंग. Yes. यस, इसका मतलब log to the base 1/2 x is of decreasing nature. Decreasing nature का मतलब if I put greater value at the position of x, then I will get the smaller result. This everyone understand?
राइट. डिक्रीजिंग नेचर का मतलब वही होता है ना कि एज यू इंक्रीज द इनपुट योर आउटपुट विल डिक्रीज. Okay, now tell me 1/3 or 1/4, which is the greater input? 1/3. 1/3 is the greater input. So which will be the greater output? 1/4 will be the greater output. अरे say something. थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है. अरे this is very straightforward. मैं फिर से बता रहा हूँ, इसलिए I am just stressing on this again and again. Again, log 5 to the base 2, log 6 to the base 2. Which is greater? log 6 to the base 2. How? Why? क्या किया यहाँ पे? log 6. यहाँ फटाफट बता दिया हमने यार, ये क्या बात हुई? ठीक है, एक और क्वेश्चन. log 1/3 to the base 2 and log 1/4 to the base 2. Which is greater? log 1/3. नहीं 1/3. 1/3. Others also please reply भैया. 1/3 1/4 से क्या कंफ्यूजन है? 1/3 is greater than 1/4 ना, तो log 1/3 to the base 2 will be greater than log 1/4 to the base 2. Correct? Yes. Correct. तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? Because base 2 का नेचर कैसा होता है? इंक्रीजिंग नेचर होता है. तो greater the input, greater the output. नहीं आई बात समझ में? log 1/3 1/2 वाला एक और क्वेश्चन दोगे तो शायद. उससे पहले मैं एक और सिंपल क्वेश्चन देता हूं. क्या आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा है? हाँ. What does this mean? What does this mean? If someone says कि x and y are directly proportional to each other, like y is equal to x plus 10. If this is the expression, so if I increase x, y will increase or not? Yes. Yes sir. Yes sir. और inverse relation में क्या होता था? Let's say y equal to 1 upon x plus 10. Now if I increase x, y will Decrease. decrease. Is this point clear to everyone? Yes sir. यहाँ वैसी ही बात चल रही है यार. यहाँ पे your log x is basically your y. Y is log x to the base 1/2. Now tell me, if I increase x, y will Decrease. decrease because base is 1/2. Base is less than 1. Since base is less than 1, it will have decreasing nature. भैया yes या no तो बोलना पड़ेगा, otherwise I won't be able to move forward. हाँ. y equal to log x to the base 2 and y equal to log x to the base 1/2. बस. अब मुझे बताओ डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है कि इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है? इन द फर्स्ट वन, इफ यू इंक्रीज x, y will increase or decrease? Increase. ये सबको क्लियर है क्या? Yes. This is the property of log. Just accept this property at this point of time. Okay, कि whenever base is greater than 1, यहाँ लिखा अपन ने, whenever base is greater than 1, nature is increasing. Yes या no? Yes. और base less than 1 है, तो then if you increase x, y will Decrease. decrease. ये जो green में मैंने बात लिखी है, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ. हाँ सर. Sure? हाँ. Others, Anish, Jain. हाँ सर. ओके, ठीक है. अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली, बेस 2 वाला. y इक्वल टू log x टू द बेस 2 का हमने एग्जांपल लिया, फॉर विच वी ऑलरेडी नो कि दैट इफ यू विल इंक्रीज द x, y will decrease. Okay, now I am putting 3 values inside this. For first x नहीं is sir, when you increase. Sir. हाँ. Sir. x is 1/2. Sorry, x1 is 1/2. सर आपने पहले लाइन में y डिक्रीजिंग लिख दिया. ओके, और सॉरी आई वाज जस्ट चेकिंग कि आप लोग कंसंट्रेट कर रहे हो कि नहीं, दैट वाज बाय मिस्टेक. y इज इंक्रीजिंग, सॉरी. या तो x1 is equal to 1/2, x2 is let's say 1/3 and x3 is 2. If I input these 3 values in log x to the base 2, can you tell me which will be greatest? X3. 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 इसका मतलब log
2 to the base 2 will be greatest or not? Yes, sir. Greatest. After that, 1 by 3. 1 by 3 or 1 by 2? 1 by 2. 1 by 2. 1 1 by 2. Yeah, 1 by 2 to the base 2, and after that, हाँ, 1 by 1 3 by to the base 2. This will be the order. Yes, sir. ये भी सबको क्लियर है? हाँ. अभी मेरा हाँ. क्वेश्चन यहाँ नीचे क्या था, दिस वन, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे. मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, log 1 by 3 to the base 2 and log 1 by 4 to the base 2, which will be greater? Log 1 by 3. Log 1 1 by by 3. 3. 1 by 3. Why? Because 1 by 3 is the bigger input and 1 by 4 is the smaller input. So log 1 by 3 to the base 2 will be greater and log 1 by 4 to the base 2 will be smaller. Why? Because there is a direct relationship. Got it? Got it? Yes, sir. क्या नंबर चेंज करके एक दो एग्जांपल और पूछूं क्या? हाँ. हाँ, Log sir. 2 by 5 to the base 3 and log क्या बोले यार, 1 by 4 to the base 3. Tell me, which will be greater? 2 by Log 5 1 by 4. and 2 by 5 होगा. Sir, 2 by 5 is greater. 2 by 5. नहीं सर. हाँ, 2 by 5. 2 by 5 is greater. 2 by 5 क्योंकि हाँ हाँ हाँ. Sure? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 2 by 5 is like what value? 0.4. हाँ, 0.4. And 1 by 4 is 0.25. It means which is the greater input? This is the greater input. This is the greater input. This is the smaller input. Correct? Yes, So sir. overall answer will be of the same pattern. That is log 2 by 5 will be greater as compared to log 1 by 4 because base was greater than 1. Got it? हाँ, sir. ठीक है. अब अपन बेस चेंज करते हैं. Let's make it base 1 by 2. Log x to the base 1 by 2. Now tell me, when you increase x, your y will Decrease. decrease. पक्का ना? तो अब आपको हाँ, सिर्फ sir. इतना ही बताना है यार, x1 लेट से 1 by 3 है, x2 1 by 4 है and x3 आपका 3 है. Just tell me, which will be greater? Log 1 by 3 1 to by the 4. base 2, then log 1 by 4 to the base 2 and log 3 to the base. अरे यार, base 2 नहीं, base 1 by 2. क्या है? Yeah, log 1 by 3 to the base 1 by 2, log 1 by 4 to the base 1 by 2 and log 3 to the base 1 So by 2. 1 by 4. Tell 1 me, by 4, sir. क्या greatest or smallest? Great. Greatest. Sure. Yes, sir. So since 1 by 4 is smallest out of the 3, So it will means get log greater. 1 by 4 will be the greatest. This will be greatest. सबको क्लियर है ये? हाँ, sir. Clear है. 1 by 4 से बड़ा क्या है? 1 by 3 एंड उससे बड़ा क्या है? 3. Yes, sir. राइट? तो रिलेशनशिप विल बी रिवर्स. इसका मतलब log 1 by 4 to the base 1 by 2 will be greatest, after which what will come? Log 1 by 3 through the base. 1 by 3 to the base 1 by 2 and after that log 3 to the base 1 by 2. This will be the relationship. समझ में आ गई बात? Now tell me, यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था, कौन ग्रेटर है आउट ऑफ द टू? log 1 by 3 to the base 1 by 2 और log 1 by 4 to the base 1 by 2? 1 by 4 to the base 1 by 2. Yeah. Why? Because 1 by 4 is smaller, hence log 1 by 4 to the base 1 by 2 will be greater. Now just focus here. Before understanding the next concept, एक छोटी सी बात और करते हैं. Every real number x can be written as the sum of its integral part plus fractional part. Just understand this. This has nothing to do with log. Any real number, let's say I am taking an example 3.4. 3.4 is basically sum of its integral part plus fractional part, where its integral part is 3
and its fractional part is the left out portion, वो जो कितना होगा 0.4. Is this clear to everyone? समझना, this is easy. Let's say number is 5.8. Integral part will be 5 and fractional part will be 0.8. Right? Let's say number is 6. Integral part will be 6 and fractional part will be 0. Right? So basically definition of integral part is integral part is always less than or equal to the number. ये हमेशा हमें याद रखना है कि इंटीग्रल पार्ट या तो लेस होता है, लाइक 3.4 का इंटीग्रल पार्ट इज 3, 5.8 का इंटीग्रल पार्ट इज 5, 6 का इंटीग्रल पार्ट इज 6. तो इंटीग्रल पार्ट इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर. ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन इज विद मी? नाउ टेल मी व्हाट विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ -3.4? What will be the integral part of -3.4 and what will be the fractional part of -3.4? Tell me. -3 minus 0.4. Okay, one answer is -3 minus 0.4. Okay, any other answer? sir. 4 सेम सर इसका तो Same. या फिर minus 4 4 minus 0.6 -4 minus greater 0.6. than- Sure. plus 0.6. Plus 0.6. ठीक है. This is another answer. Any yeah. other answer out except these two? हाँ. So what is the answer? I am again giving you 2 minutes. Tell me. 0.6. First one, A option or B option? Again, reply. Everyone. B. B. Okay. Anyone with A? अगर ये लग रहा है तो that is completely fine. Just tell me. अभी अपन ने यहाँ पे लिखा इंटीग्रल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. इंटीग्रल पार्ट कैन नॉट बी ग्रेटर. तो क्या -3.4 और -3? -3 is greater than -3.4. This cannot be the integral part. Integral part is always smaller. Is this point clear? हाँ sir. So if you take integral part as -4, then obviously fractional part will be 0.6 because sum has to be -3.4. Got it? तो फटाफट आंसर बताओ. -5.6 इंटीग्रल पार्ट, -6 फ्रैक्शनल पार्ट plus 0.4. +0.4. करेक्ट? ठीक है. तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताओ. एनी गेस? फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1. करेक्ट. फ्रैक्शनल पार्ट always lies between 0 and 1 where 0 is included. I hope these 2 points are also clear. Clear to हाँ, sir. everyone? Yes sir. ठीक है. तो इसका एप्लीकेशन क्या है? लाइक आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा है. मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. क्लास 12th में भी हम लोग इसमें काफी डिटेल में बात करते हैं और अभी लॉगरिथम में भी करने वाले हैं. जस्ट गिव मी 5 more minutes. Okay. So is this point clear to everyone? Again, I am asking 3-4 simple questions. 7.6. What is the integral part? 7 Plus 0.6. ठीक है. 8. What is the integral part? 8 plus 0. Minus 7.6. What is the integral part? -8 -8 plus 0.4. And -8. What is the integral part? -8 plus 0. Are these 4 examples clear to everyone? अब ऐसा मत बोलना सर और कोई एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि इनमें सब कवर हो गए. ऑल केसेस आर कवर्ड इन दिस. गॉट इट? ठीक है. अब अगर ये बात समझ में आ गई, नाउ टेल मी. अपन कल बात कर रहे थे कि अगर हमें कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, लेट्स से log 25 to the base 2, अगर हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, फॉर दिस वी नीड एक्सटर्नल हेल्प, एंड दैट Yes, एक्सटर्नल sir. हेल्प इज कॉल्ड log table.
अब आप बोलो सर कैलकुलेटर भी हो सकता है, ऐसे तो कंप्यूटर भी हो सकता है, राइट? उसमें भी जो लॉजिक यूज होता है दैट इज लॉग टेबल ओनली. ओके, तो log 25 to the base 2 to find the exact value of this log we need external help, that is we have to refer log table. This we already discussed in the previous class. All right, अब मुझे एक बात बताओ कि log 25 to the base 2 की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, बट क्या इसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं क्या? आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट. log 25 to the base 2 हमें नहीं पता, बट क्या हमें log 16 to the base 2 पता है? हाँ सर, ये 4 होता है. Okay. And log And 32 to the base 2 is correct. 5. log तो 32 to the base 2 पता है हमें, तो log 25 to the base 2 will be between these two or not? Yes या no? हाँ. Yes Yes. sir, yes sir. होगा. इसका मतलब this is 4, log 25 to the base 2 is in between and this is 5. Yes. Do you agree or not? Agree, If sir. do you agree, it means इसका जो वैल्यू होगा that will be 4 point something. Yes sir. We don't know that something, but we at least know कि it is 4 point something. तो can you tell me इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 4. 4. किसी को डाउट तो नहीं है? इंटीग्रल पार्ट विल बी 4. एक फ्रैक्शनल पार्ट हमें पता नहीं है, पर इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर. इंटीग्रल पार्ट के लिए हमें कभी लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती. लॉग टेबल से हम क्या निकालते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट. तो लॉग टेबल्स आर यूज्ड टू फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Sir. एक और एग्जांपल देखते हैं. log 32 to the base 3. कैन एनीवन टेल मी इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 32 से थोड़ा सा छोटा ऐसा इंटीजर चाहिए विच इज लाइक मल्टीपल ऑफ 3. 27. करेक्ट. तो log 27 to the base 3 and a greater number. 81 नहीं बैठता है नेक्स्ट वाला. Yeah, 81 to the base 3. Will this inequality hold? Yes sir, yes sir. log 27 to the base 3 is 3. 3 point. log 32 3 to the point base 3 something. is we don't know, and this will be 4. It means log 32 to the base 3 will be 3 point something. हाँ. Hence इसका integral part will be 3 plus some fractional part. हाँ. क्या ये point सबको समझ में आ रहा है? Again हाँ, I sir. need reply from everyone. Yes. Sir. Yes. Everyone. तो बेसिकली जो मैंने दो टर्म्स लिखे थे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा फॉर लॉग, इज कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इंटीग्रल पार्ट का ऑल्टरनेटिव वर्ड है एंड मैंटिसा इज फॉर फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, तो किसी भी लॉग का जब हम इंटीग्रल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इट मींस हम उसका क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक. और अगर हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैंटिसा. तो जस्ट फॉर लॉगरिथम, इंटीग्रल पार्ट हैज अनदर नेम विच इज कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट हैज अनदर नेम विच इज मैंटिसा. तो इसका मतलब हो गया लॉग टेबल्स आर यूज्ड टू फाइंड मैंटिसा. ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए. जस्ट नोट दिस सो दैट इस पे अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं. नाउ जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन. log 5 to the base 2 log 15 to the base 3 log 6 to the base 5 या log 24 to the base 5. just change this. log 24 to the base 5 and log 0.5 to the base 7. Arrange all these four in increasing order. Now bases are different, numbers are different, no pattern. You have to arrange all these four terms in increasing order. ठीक है. log 5 to the base 2 का approximate value कितना होगा? 2 point something. 2 point something.
सबको समझ में आता है ये? log 35 टू द बेस 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? 3 3 जा 9 3 जा 27, उसके बाद ये आ रहा है तो 3 पॉइंट समथिंग. log 24 टू द बेस 5 का वैल्यू कितना होगा? 1 point something. 1 पॉइंट समथिंग. एंड log 0.5 टू द बेस 7 कैसा होगा? नेगेटिव. Negative. हाँ, negative. नाउ टेल मी द इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्लियर है कि सबसे पहले ये आएगा फर्स्ट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन सेकंड, देन थर्ड and then fourth. This is the largest. Clear to everyone? Yes, sir. ठीक है, fine. अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो let's do one question on this. Yeah. Question is, if characteristic of log of a number n to the base 3 is 4, then number of integral values of n is. Try to understand this question. So final answer is पता है क्या है? 81 to 243, where 81 is included and 243 is excluded. So now you have to find out how many integers are there in this interval. So this is 243 minus 81, that is 162. So 162 is the answer. ठीक है, देखो अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को. If characteristic of a log of a number n to the base 3 is 4, इसका मतलब there is a number n, log n to the base 3. इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना दे दिया? 4. It means this number is basically 4 point something. ये समझ में आना चाहिए भैया इतना पढ़ के. या ये जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन था, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n to base 3 is 4. It means log n to base 3 is 4 point something. ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, इतना तो समझा. अदर्स? हाँ सर. ठीक है, ठीक है. अब इसका मतलब हुआ log n to the base 3 का कैरेक्टरिस्टिक 4 है, तो log n to the base 3 कहां से कहां के बीच में हुआ? इट शुड बी बिटवीन 4 to 5, तभी कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा ना. Where 4 should also be included, because 4 का इंटीग्रल पार्ट इज 4, 4.1 का भी इंटीग्रल पार्ट इज 4, 4.8 का भी इंटीग्रल पार्ट इज 4, 4.9 का भी इंटीग्रल पार्ट इज 4, बट 5 का इंटीग्रल पार्ट इज 5. So if you have, if it is given that the integral part is 4, it means log n to the base 3 will lie between 4 to 5, where 4 is included. ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है. अब अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो हमें किसके बारे में पता करना है? n के बारे में पता करना है. कैन एनीवन टेल मी यहां से n कौन सी दो वैल्यूज के बीच में होना चाहिए? Equal to 3 to the power 4 से 3 to the power 5. के बीच में. Okay. तभी तो यहां जब 3 to the power 4 रखोगे तो you will get 4, and 3 to the power 5 रखोगे तो you will get 5. Yes, sir. So final answer is like this. n has to be between 3 to the power 4 से 3 to the power 5, and has to be between 81 से 243. So 81 से 243 के बीच में we are asked integral values of n. So how many integral values? 81, 82, 83, 84 up to 242. 243. 242. अच्छा, हाँ. These are your answers. Now just analyze this question once again, or analyze this answer. That is log of 81 to the base 3, log of 82 to the base 3, log of 90 to the base 3. ये सबका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा that will be 4 point something. 4 point something, 4 point something, 4 point something, and so on. Yeah, in fact, before doing one more question, I just want to conclude what we are discussing. That is, if log n to the base a is between
m say m plus 1, then n will be between a to the power m say a to the power m plus 1. ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए. हाँ सर, ये कंडीशन तो समझ गए पहले. समझ में आ रही है ये? वी नो ना कि log n to the base a is basically x, तो n क्या होता है a to the power x. On the similar lines, if log n to the base a is less than x, तो n will be less than a raised to x. बट ये सब ये when a is greater than 1, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना, दिस इज फॉर a greater than 1. a less than 1 में नेचर रिवर्सेस, जो अभी बाद में बात करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो ये a greater than 1 के लिए बात चल रही है. दैट इज log n to the base a is less than x, then n will be less than a to the power x. And similarly, if log n to the base a is greater than x, then n will be greater than a to the power x. तो फिर तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है. log n to the base a is less than m plus 1. It means n will be less than a की power m plus 1. हाँ सर. And similarly, इधर left hand side we will get a to the power m. So I think ये क्लियर होना चाहिए. अगर ये क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट क्लियर था ना कि log n to the base 3 is between 4 to 5, because that is given in the question. क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक 4 बोला है, तो हाँ, log sir. will be between 4 to 5, तभी तो कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा. हाँ सर. एंड सिंस दिस वाज बिटवीन 4 to 5, तो मैं log हटाता हूं अगर, तो n will be between 3 to the power 5 and 3 to the power 4. क्वेश्चन ओवर. log n to the base m is equal to alpha plus beta, where alpha is characteristic and beta is mantissa. Okay. First part. If m and alpha are prime and alpha plus m equals 7, then greatest integral value of n is. If m and alpha are prime and alpha plus m is 7, so first tell me alpha or m क्या होंगे? It has nothing to do with log. Basic question. 5 and 2. 5 and 2, yeah. 5 and 2, correct. और कुछ नहीं हो सकता. You can consider all the possibility. The only possibility here it is one number should be 5 and other should be 2. But now alpha and m are like two different type of quantities. Alpha is the integral part, m is the base. Hence there are two cases. Case 1, alpha is 5 and m is 2. And case 2, alpha is 2 and m is 5. Agree or not? Yes sir. तो what we have done is हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया और कुछ नहीं बचा इसमें. What is asked now? We have been asked greatest integral value of n. हमसे कैपिटल n का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, मतलब n की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो भी हो सकती है. तो ठीक है, लेट्स ट्राई. मुझे एक बात बताओ, अपन फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं. log n to the base m कितना है? 2 is equal to 5 plus beta. यही होगा ना फॉर केस 1? Yes sir. But we can neglect beta, like. Yeah, we will neglect ना. But log n to the base 2 तो exact 5 plus beta के बराबर होगा. It means log n to the base 2 is between 5 and 6. Yes. Because उसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है, तो उसकी वैल्यू 5 से 6 के बीच में होगी कि नहीं होगी? जिनको नहीं आया था समझ में, प्लीज रिप्लाई. यहां तक समझ में आया? Yes, sir. और सिंस log n to the base 2 is between 5 to 6, n will be between. ये ऊपर वाला रिजल्ट अप्लाई करना है. इधर 2 to the power 5 हो जाएगा and this side it will be 2 to the power 6. It means your n is between 2 to the power 5 is 32 and 2 to the power 6 is 64. So highest value of n is n maximum in this range is what? 64 or 63? 63.
दिस इज क्लियर. सो केस 1 का मैक्सिमम वैल्यू n का आ रहा है इन केस 1 63, बट देयर इज वन मोर केस विच वी हैव टू कंसिडर. केस 2, इसमें अल्फा इज टू m इज 5. इसका मतलब नंबर विल बी log n to the base 5 and alpha is 2, तो 2 plus बीटा. यही बनेगा जो ओरिजिनल अपन को इक्वेशन दिया था, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा एंड m in that equation. It implies log n to the base 5 is between which two values? 2 and 3. 2 raised to 5 and It means 5 raised to 2 and 5. n is between 5 raised to the power 2 to 5 raised to the power 3. It means n का maximum value कितना हुआ? ये 5 raised to the power 3 is 125, just one less than this because this is not included. 124. Now which is maximum? Overall maximum 124. So answer is 124. This is your final answer. Yeah. So same question, second part. इसका second part है. If m and alpha are twin prime and alpha plus m equals 8, then greatest integral value of n is. Alpha plus m is 8, where alpha and m are twin prime. First tell me what are the options for alpha and m? 5 and 3. 5 and 3. Twin prime are 3 and 5 only. Okay. So case 1. Case 1 क्या होगा? Alpha 3 m5 and case 2 क्या होगा यहाँ पे? Alpha 5 and m3. Right? Obviously दो cases बनेंगे. नेक्स्ट अपना टर्म क्या था? लॉग वाला टर्म क्या था? ये सॉरी इक्वेशन क्या थी? अवर इक्वेशन वाज log of n to the base m is your alpha plus beta. ये इक्वेशन दिया था ना. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ m एंड अल्फा इन दिस इक्वेशन. क्या मिलेगा? log n to the base 5 is equal to 3 plus beta. इसके आगे सॉल्व करना आता है कि नहीं आता यार सबको? इसका मतलब log n to the base 5 का कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो इट शुड बी बिटवीन 3 to 4. अदर्स प्लीज रिप्लाई. थर्ड क्वेश्चन चल रहा है वैसा ही. Yes, sir. तो n विल बी बिटवीन 5 to the power 3 से 5 to the power 4. तो n मैक्स कितना हुआ? 5 to the power 4 होता है 625, तो n max हुआ 624 फ्रॉम फर्स्ट केस. सेकेंड केस log n to the base m. m क्या है इन सेकेंड केस? इट इज 3 एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 5 plus beta. It implies log n to the base 3 will be between 5 to 6. It implies n will be between 3 to the power 5 to 3 to the power 6. 3 to the power 6 729 होता है, तो n max is basically 728. So what is the overall maximum value which we can get from this question? 728. तो answer is 728. Inequalities in logarithm. Inequalities in logarithm. इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मुझे एक बात बताओ, इफ x1 is less than x2, then log of x1 to the base a and log of x2 to the base a में से कौन बड़ा होगा? Without knowing the range of a, we cannot answer this. There are two possibilities. So first case, a is greater than 1. Tell me now. If a is greater than 1, then x2 is greater. Correct? And when a is between 0 to 1, then x1 is greater. log x1.
log x1 to the base a will be greater than log x2 to the base a. So can we say this situation like this कि that is if base is greater than 1 then inequality is intact दोनों तरफ log लेने पर, and if base is less than 1 inequality reverses. Yes या no? ये कुछ वैसी बात होती है कि यार x square minus 5 greater than 6 है. If I multiply both sides by a positive number, inequality will remain same. And negative पे it will. And negative पे it will reverse. कुछ वैसी बात हो गई कि दोनों तरफ log लिया पर base 1 से बड़ा था, inequality will be same. But दोनों तरफ log लिया and base was less than 1, inequality will reverse. अगर कभी ऐसा आ जाए, log x1 to the base a is, this is our first result, second result, is less than log x2 to the base a. We have to eliminate log. Again, two cases will be there. First case, base 1 से बड़ा है. Can you tell me log हटा के क्या मिलेगा? x1 less than x2. Inequality is same. Yeah, and when base is between 0 to 1, inequality will reverse. समझ में आ रही बात? Yes, sir. पक्का? ठीक है. अगली बात. अब अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि log of x to the base a is less than p. Two cases, base greater than 1, base is between 0 to 1. अब दोनों तरफ log नहीं है यार, सिर्फ एक तरफ log है. क्या करें? अपन को दोनों तरफ log होते तब तो अपन कर पाते. Yes. Can we express p in terms of log? A raised to p. p को लिख सकते हैं log a to the power p to the base a. सर ये नहीं समझा. देखो ना यार, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? p will come outside and log a to the base a will become 1. तो p आ गया ना. इसका मतलब बेसिकली p को हमने ऐसा लिख लिया, p into log a to the base a. We introduced 1 और देन p को हमने पावर में ले लिया, तो इट बिकम log a to the power p to the base a. तो p can be written like this any time. Okay. Right? तो अपने पास ये inequality क्या आ गई? Log x to the base a is less than log a to the power p to the base a. Yeah. Now can you compare? Can you eliminate log both sides? Yes. So what you will get? X is less than a to the power p. And here x is greater than a to the power p. Clear है? तो यार अगर वही रिजल्ट आ रहा है तो फिर तो अपन को ये अलग से इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है ना. अपन तो वैसे ही कैलकुलेशन करते कि log x to the base a अगर p के बराबर होता है then x is equal to a to the power p. Yeah. तो यहाँ पे भी वही करना है. a को हम राइट साइड में ले गए तो राइट साइड में क्या बन गया? a की पावर p बन गया. लेफ्ट साइड में we are left with only x and inequality will remain same or reverse will depend on base a. Okay. Is this point clear? Yes, sir. So now tell me this. Log x minus 2 to the base 3 is less than 4. Find the value of x. Solve this inequality and find the value. 4 कितना होता है? यार ये मुझसे मत पूछो please. 81. Sorry. Yeah. Sir, 83 is the answer. Yeah, 83. What 83? मतलब inequality आएगी ना यार. X is less than 83. Less than 83. Sure? Yes, sir. Okay, let me check. क्या करें इसके अंदर? We have to eliminate log. Since base is greater than 1, inequality will be same. So we can write this as x minus 2 less than 3 to the power 4. It implies x is less than 81 plus 2. 2 we have taken to the right. It means x is less than 83. So you are saying कि इस inequality का आंसर क्या आ रहा है? x is less than 83. Correct? Yes. इसका मतलब 83 से छोटी सारी values should satisfy this inequality. Yes. ठीक है? I am just giving you one value. X is equal to 1.
Is 1 smaller than 83? Yes, it is. Is 1 satisfying this inequality? Check and let me know. Yes नहीं sir. sir. Yes sir. Inequality कैसे? satisfy कर रहा है ना. अच्छा वो that's inequality. So हाँ sir. See, if we put 1, then what will be the term? Log of -1 to the base 3. yeah, since they are opposite sides of unity, then the value is negative, which is less than 4, which is okay. Okay, I'm just writing it. Log of -1 to the base 3. Right? Yeah. I need answer from someone else. Log -1 to the base 3. Will this be positive or negative? Negative. negative. Okay. One answer negative, another answer negative. Any other answer? My question is simple. Log -1 to... Negative. Okay, Sir, third answer negative. Sir, actually, possible ही नहीं है, because 3 raised to anything will never give you a negative value. Correct. It is not possible. log के अंदर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. पहले दिन पढ़ा था log के बारे में. That is log of n to the base a defined कब होता है? When n is greater than 0. Number has to be greater than 0. भूल गए क्या? Check So your... x should be more than 3 or less, more or equal to 3. हाँ तो वी हैव जस्ट अप्लाइड वन कंडीशन. एक कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट हमेशा लगानी होती है. दैट इज द नंबर इनसाइड लॉग हैज टू बी greater than 0, not 1. मतलब okay. It's not same ना. x minus 2 greater than 0. हम सिर्फ इंटीजर्स में बात नहीं करते ना. 0.5 भी हो सकता है नंबर, 0.6 भी हो सकता है. सो यू हैव टू टेक x minus 2 greater than 0. So x is greater than +2. 2. So your final answer is intersection of this one and this one. X should be greater than 2. X should be less than 83. Can you tell me the final answer? This is your final answer of this inequality. 2,83 in open interval. Open interval. We can write it like this also. X is between 2, 83, both open. This is the final answer.